back to my channel. It feels so weird to say welcome back to my channel क्योंकि मैं शायद 3 months active नहीं थी YouTube पे, and I have been receiving a lot of messages on YouTube, on Instagram, like what has happened. क्या आपने YouTube छोड़ दिया? क्या आप ठीक हो? Or what has happened? You know. And today I thought I'll make this video to let you know, guys, what has been happening in my life, और मैं क्यों active नहीं थी. And as you can see, I'm perfectly fine. Same, अभी भी मोटी हूँ, हाथी जैसी हूँ. But that's another thing. And I'm doing perfectly well. सब कुछ सही है. Everything is good. But there have been certain changes which has been happening in my life. और उसके वजह से I wasn't so active on YouTube as I should be. And I wasn't even posting anything on Instagram as well. तो आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसमें मैं क्या बोलूँगी कि मेरा क्या हुआ है लाइफ में इतना कि I had to stop making videos. But I haven't quit YouTube. I'm coming back. अभी तो मैंने I think after 2 months के बाद वीडियो डाला है, लेकिन from now I'm going to be regular in videos. And but one thing that I want you guys to know is that I'm not a full-time YouTuber. मतलब कि मेरा जो source of income है, right? And my source of living and my job is not YouTube. I work here in Dubai. और फिर मेरा जो main job जो है, I'm still here in Dubai and YouTube is not my main job. Although मैं सोचती थी पहले after I cross 1 lakh subscriber मैं YouTube में ही ध्यान दूंगी and मैं ये job छोड़ दूंगी, but that's not possible because when I took that 4 months leave last year in 2021 जहाँ पर मैं पाकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अल्बानिया गई थी, तब मुझे realize हुआ that okay, I love traveling. Traveling is like my heart and soul. क्या बोल सकते हैं traveling के बारे में तो, और ये चैनल भी traveling का ही चैनल है. That time I realized that the type of traveling that I like can also be done when I'm working. शायद एक दिन मैं ये job छोड़ के I'll become a full-time traveler, but I don't see it happening as of now क्योंकि I like this job that I'm doing right now. I'm happy here. So जो मैं अभी बोल रही हूँ वो सब जो है मैं आप लोगों को बस थोड़ा सा बता रही हूँ. But let's get into deeper into what's actually happening और क्या हुआ as of why I took break from YouTube and what am I going to do with this channel. तो before that एक बार तो चाय पीते. But now I'm going to go and make lunch, prepare lunch for Dipanshu and Akansha. I know it's been so late. मैं अभी उठी हूँ, लेकिन मैं लेट उठी हूँ आज क्योंकि आज Sunday है. That means it's the weekend. तो मैं बनाने जा रही हूँ आज Bhutanese food. And I'm going to show you as well, and I will tell you in the process कि क्या हुआ exactly, why I had to take a break or leave. चलते हैं अब किचन में चलते हैं and कुछ काम करते हैं किचन में. So when I came back from Albania, which was back in 2021, I think in the month of October, I was shifted to Abu Dhabi. Now I think because I don't work for that company anymore, I can say this openly, but the previous company that I was working for, वो बहुत टफ फाइनेंशियल सिचुएशन से जा रहा था. एज अ रिजल्ट 6 months का सैलरी भी हमें नहीं मिला था. सो इट वॉज लाइक दिस दैट इफ़ यू गेट अ सैलरी राइट नाउ, शायद आपको 3 months तक नहीं मिल सकते. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई वॉज थिंकिंग लाइक ओके मे बी आई शुड रिजाइन और व्हाट शुड आई डू. बट देन वन गुड थिंग अबाउट द कंपनी वॉज दैट कि आई कुड टेक लीव व्हेन एवर आई वांटेड. तो जो भी अभी आपने मेरा ट्रैवल वीडियोस देखा है, दैट वाज बिकॉज आई टुक लीव व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर द प्रीवियस कंपनी एंड दे वुड ग्रांट मी लीव व्हेनेवर आई वांटेड. तो फिर मैं वापस आ गई अल्बानिया से एंड दे सेड ओके दुबई ऑफिस अब बंद होने वाले हैं बिकॉज वी डोंट हैव द मनी टू पे ऑल दिस थिंग्स, सो वी हैव टू शिफ्ट बैक टू आवर मेन फैक्ट्री विच इज़ देयर इन अबू धाबी. तो फिर मैं गई अबू धाबी में. व्हेन आई वाज इन अबू धाबी आई वाज नॉट हैप्पी एट ऑल बिकॉज द सिचुएशन वाज सो डिफिकल्ट. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट पर्सनल क्योंकि मैंने ये शेयर नहीं करती है ऐसे तो, बट आई लुक आफ्टर माई मॉम. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई मॉम बिकॉज माई पेरेंट्स आर डाइवोर्स्ड बैक इन भूटान. सो इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हैव अ कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यूट्यूब से मुझे इनकम नहीं मिलता. यूट्यूब से मिलता है, ऑब्वियसली यू कैन गेट मनी फ्रॉम यूट्यूब. बट देन द थिंग वॉज दैट द मनी दैट आई गेट फ्रॉम यूट्यूब, आई विल हैव टू फोकस ऑन ट्रैवलिंग. आई हैव टू spend that on traveling, manage my traveling as well. Plus I have to look after my mom in Bhutan. I am just chopping the onions, so थोड़ा sound आएगा. तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर if it's a case like this that I'm not getting my salary and फिर I'll have to travel as well, then I think I should look for another job. Then with the grace of God I got another job, a good job, the one that I'm currently employed at.
I'm sure that many of us has gone through this where we come to know that, और शायद आपको YouTube में दिखाया होगा, नहीं तो आपको friends, families, they say that you don't need money to travel. I'm not trying to go against this, but you do need money to travel. ये थोड़ी ना हो सकता है कि आपने बैग उठाया and you leave the house, you tell everyone bye bye. I'm going to travel, I'll be back after 1 year or 2 years. I'm so sorry to inform this, but you need money to travel. You will at least need money for a flight ticket. Until and unless you are going to travel in your own country. जो हम लोगों को इतना हम own country में travel नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें तो बाहर का दुनिया देखना है, क्योंकि हमें बाहर culture का शौक है. So most of the time we leave behind our own country, which even traveling के मामले में you can explore our own country as well. जो अभी मैंने खुद ने इतना explore नहीं किया है मेरा country, but and after you reach to the particular destination, if you are going to travel some country, they restrict hitchhiking. So there are so many things like, okay, you can stay in a couchsurfing host, you can take your tent, you can do this that, but then the thing is that कहीं ना कहीं आपको पैसा चाहिए ही होगा. So when people say कि you can travel for free, it doesn't mean that you can travel for zero balance. तो मेरा यही था कि okay, I can travel for a less budget, but then the thing is that I also have other responsibility that I have to fulfill. I was not able to upload video क्योंकि life got busy and Dipanshu came back from, I think he came back from Bangladesh, and then we had to start looking for a new house क्योंकि जहाँ पर मैं पहले रह रही थी. So in the month of December, I took a small room. It was just a small room. It was even smaller than the kitchen that you see here. It was that smaller than this kitchen. तो उस room में I was staying and it was so congested कि उसमें ना आपको उठ के like you don't feel like doing anything because there's no space. There's only one bed. तो वहाँ पर मैंने बहुत try किया कि okay, I'm going to edit this video. I'm going to upload video on YouTube. लेकिन हो ही नहीं पा रहा था वहाँ पर क्योंकि environment ही ऐसा था like it was kind of depressing, but I tried my best. एक month उसमें गुजार दिया. फिर दीपांशु आ गया वापस from Bangladesh, and after that we moved to this new home. This is I think too much of the topic that I'm giving you. Let me. आप लोगों से बात करते करते मैंने ये अनियन कट कर लिया. This is mainly to make dasi. I'm going to make shamu dasi. Shamu dasi मतलब है mushroom and cheese, जो Bhutanese dish होता है. And rice is cooking here, is getting cooked. Sound आ रहा है यहाँ पर. और मैंने ये खरीदा है. This is for measuring the food and all these things क्योंकि थोड़ा weight को कम करना है. You see this mushroom? ये mushroom है oyster mushroom. I was actually supposed to use this mushroom, लेकिन ये mushroom क्या हुआ ना, फ्रिज में रखा था and like you can see, it's not focusing. फोकस ही नहीं कर रहा है. कोई बात नहीं, अब कर रहा है थोड़ा. ये काला काला हो गया है. सो एज अ रिजल्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस मशरूम. आप लोग को मैं एंड रिजल्ट बताऊंगी. मैं ये मशरूम डालने वाली हूँ. सम ग्रीन चिलीज इन इट, pour some water and just boil, and some cheese. I will show you the end result. कौन है कि तुम्हारे पास है? अरे दरवाजा लॉक कर दिया. अरे की नहीं है क्या तुम्हारे पास? ठीक है, तुम लेकर गए थे ना मॉर्निंग पे. टेंग टेंग. अरे क्या बिल्डिंग में आग वाग लग जाती तो ये दीपांशु ने मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया. क्या गिफ्ट है ये? अरे तुम कह रहे थे ना तुम डे टू डे से वो लेके आई थे क्या? टिश्यू. हाँ हाँ, उस अच्छे नहीं थे. मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि डे टू डे से टॉयलेट पेपर लेकर आए थे. ब्रेडन हम दोनों गए थे लेने के लिए. तो जब ब्रेडन हम दोनों डे टू डे गए थे, वी बॉट दिस टॉयलेट पेपर एंड अभी तो अच्छा ही है कट, पर प्रीवियस जो कट था ना वो लाइक इट वाज सच हॉरिबल. पेपर क्वालिटी भी अच्छी नहीं है. हाँ, पेपर क्वालिटी भी अच्छा है. तो दीपांशु मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए टिश्यू पेपर. अबे सस्ते में मिल रहे थे. क्या देख रहे हो तुम? अरे मैं तुमने अभी वो वहाँ पे इंस्टा पे स्टोरी डाली ना कि आस्क मी क्वेश्चंस, तो लोग देखो ना क्या क्या क्वेश्चन है. व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड टू नो व्हाट शुभम आर यू. यार कितने लोग इंटरेस्टेड है पर्सनल लाइफ में. मैं भी, मेरा तो दूसरा चैनल, उस पे वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा जब इधर आऊँ. हाँ करो. अब की बार है ना अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, तभी जाएंगे जब लोग पैसे देंगे. कौन कौन पैसे देगा तुम्हें रेस्टोरेंट जाने के लिए? तुम्हारा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं है? अरे मजाक कर रहा हूँ यार.
तुम ये डालोगे वीडियो में? हाँ ऑफ कोर्स। अरे क्या पूछ रही हो तुम? तुम्हारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन किधर है? मैं नहीं बताऊंगा यार अभी। बता दो। तुम वीडियो कब डाल रही हो बताओ? कल डाल रही हूँ मैं। कल डाल रही हो? नहीं यार कल नहीं, अगली वीडियो में बता देना प्लीज। कल से मैं स्टोरी डालना स्टार्ट करूंगा तो। सो नाउ द फूड इज रेडी। मैंने जो दूसरा मशरूम था उसको भी फ्राई कर लिया और ये बहुत टेस्टी है। आई स्वेयर आई थिंक आई एम इन लव विद माय ओन कुकिंग। ये है जो दासी जो मैंने बनाया था मशरूम। ये तो ऑब्वियसली टेस्टी होगा ही, लेकिन ये दिस इज लाइक सो गुड। आई कैन हियर देम कमिंग नाउ। हेलो कैमरा ये सामने। So sorry. क्यों सॉरी? अभी तो लेट हो गई हूँ मैं। और तुम टैक्सी लेकर आ गए। हर मोमेंट को कैश कर रही हो है। ऑफ कोर्स। और मैं ये आ गई हूँ अनुषा के घर में। वेलकम टू होम स्वीट होम। थैंक यू। और लाइट ऑन करने के बाद कितना डिफरेंस आ रहा अरे है। वो लाइट आ रही है क्या मस्त लग रहा है आकाश। लाइट ऑन होने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। एंड ये वीडियो जो आज मैंने बनाया है, जो आप लोग देख रहे हो, दैट्स ओनली एन अपडेट ऑफ व्हाट्स बीन हैपनिंग इन माय लाइफ, व्हाई आई हैवंट बीन एक्टिव, और मैंने अभी तक वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया। इट्स बीन 2-3 months. In a nutshell, I've been busy with my work. I got a new job, a new apartment, or life was just going on. But I will be active and I'm traveling soon. तो आप लोग देखते रह जाएगा मतलब क्या? I don't understand. I mean, keep watching. और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. So take care guys and bye bye. Oh, but before I say bye, अगर आप लोगों के पास कुछ भी क्वेश्चन हो, like for the next Q&A video, please comment down below so I will answer them. I'll try to answer all of them if I can. And take care. I think that's it. Bye bye.